we cannot say anything about these things, nothing. They can say sometime, when Maharaji left his body many years before that, he used to say, there was a Baba who left his body and his body was cremated. After 1 month he reappeared. So what was his aim of telling why he told? Nobody can say about that. वैसे तो इनका असली नाम था लक्ष्मण दास, आपने सुना भी होगा। कोई नीम करोली बाबा बोलते थे, कोई कंबल वाले बाबा बोलते थे, कोई तेलिया बाबा बोलते थे। इनको वृंदावन में कोई चमत्कारी बाबा कहता था, कोई जादूगर बाबा कहता था, कोई कुछ कहता था। He had a number of names during his life, from his birth name, Lakshmi Narayan Sharma. So when people say I met him at this stage, and they could met him with a different name and stuff like that. But from there, apparently, he goes to BABA NEEB, which is where that lake is, and now there's a little temple there. And when Maharaj was known as Talaya Baba, where you go under the water when people would come to see him for hours at a time. Sant Lakshman Das, probably Baba Lakshman Das, was given to him at Neeb Karorii itself. ब्रिटिश टाइम की बात थी कि आपने सुना होगा वो रेल रोकने वाली घटना। हाँ, वो आप बैठ के वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में जाकर उसमें अपने साथियों को भी बैठा लिया, सबको। उनका बंद तो फरुखाबाद से उन्होंने उनको बैठा लिया। टीटी आया, उन्होंने चेक किया, वो नीब करोली वाली स्टेशन, वहाँ पे उनको उतार दिया। उतारने के बाद उनका बस जरा सा और जाना है तो उतार दे दो, उतर के चला ले अपनी गाड़ी। अब वो गाड़ी दस से मस भी नहीं हुई तो न चली नहीं। तो फिर किसी ने कहा कि तुमने इतनी साधु का अपमान क्यों, ना जरा दूर और जाना था, उनको बैठा ले जाते। उनका वो नहीं करोगे तो नहीं चलेगी गाड़ी। बहुत देर हो गई थी ना, काफी। तो एंग्लो इंडियन था तो उसने अनुरोध किया और बाबा जी फिर बैठे और चल कहा तो चलने लगे। अब लेकिन ये घटना इतनी ख्याति प्राप्त होगी, प्रसिद्धि होगी कि बाबा जी ने वो गांव ही छोड़ दिया। फिर बाबा लक्ष्मण दास भाई है, बाबा लक्ष्मण दास। बाबा ने जब गांव भी छोड़ दिया तो कहाँ से आए बाबा? क्या तो नीब करोली वाले बाबा, नीब करोली वाले बाबा चलता था। वाले शब्द धीरे धीरे हट गया और नीब करोली बाबा जी, और जिसको उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। महाराज जी देखिए, संत कहें या अवतार कहें उनको, वो तो मनुष्य के बीच में एक लीला करने आए थे। मैं तो उनको यही समझती हूँ कि उनका कोई रूप नहीं था। जहाँ भी जाते थे अपना रूप भी बदल लेते थे। रूप बदल लेने का मतलब ये है कि कहीं भी गए हैं, कोई कष्ट में है तो कोई दूसरा रूप करके उसको मदद कराई। बाद में लोग वो समझेंगे कि वो तो बाबा जी आए थे। अपार शक्ति थी। हनुमान जी के अवतार में बताते थे लोग, कोई कोई जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। Thing is, Neem Karorii Baba is a Hanuman avatar. What else is there to say? Hanuman ji. अब हनुमान जी बुद्धूम लगा के थोड़ी आएंगे। हनुमान जी ही आएंगे, महाराज के शरीर में ही आएंगे। वो महाराज के साक्षात हनुमान जी थे, इसमें कोई शक नहीं।
महाराज जी स्वयं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण या हनुमान जी के प्रति भेजकर हनुमान जी के साथ सान्निध्य करा के वो दास भावना को सिद्ध करना चाहते हैं, दास्य भाव को। You know, the old devotees, many of the old devotees worshipped him as Shiva. And after all, Shiva it's Shiva's energy that comes in through Hanuman. Rudra, the 11th Rudra, Shiva. Rudra, it's a monkey face. ये विभिन्न मुद्राएं जो हैं संसार से पार लगाने के लिए अनेकानेक रूप हैं। अनेकानेक रूप आय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वह विष्णु स्वरूप है। एक बुद्धिमान बड़े भगवान के रक्षक है ना, और मान लो आपके में रक्षक बोलते हैं, हमारे पीर पैगंबर बोलते हैं। कोई एक ही बात है, वो आप दिल में करोगे उनके मन में आ जाएगी कि हाँ फलां इंसान ने ये बात कहा है, उसकी भाई पूरी करो। अपने भगवान से अपने ऊपर मालिक से मांगते हैं भाई उसकी दुआ पूरी करो, हमें कुछ मुसीबत दे दो, उसकी दुआ पूरी करके पूरी कर दो। चमत्कार को नमस्कार है, बाबा जी कुछ नहीं, दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है। ऐसे चमत्कार दिखाए जो आदमी असंभव समझता था वो संभव किए, यही कारण है कि हर आदमी उसका सच हो गया। I was going to school in Chicago and hitchhiked to the East Coast. And I was in Massachusetts hitchhiking one day and I got picked up by a couple in a van. I got into the back seat and as soon as I got in, I noticed they had this little photo of an old man in a blanket. It was only about 2 inches square. And I couldn't stop looking at it. And after I don't know, several minutes or maybe 10 minutes of looking at it, I began to feel emotion, like tears. And I was like, okay, what's going on? And eventually I actually started sobbing. And the woman turned to me and she says, oh, what's wrong, honey? And I said, I don't know, who is that a picture of? And she said, oh, that's our guru, Neem Karorii Baba. When she said Neem Karorii Baba, it was like,
I felt it deep in my being, and lights went off, and the tears flowed non-stop. It was his grace, what is called, in Hindi there is a word ahatuki kripa. Ahatuki, very beautiful word. It has got a very good depth. Ahatuki means the grace which you get without doing anything. If you have got the grace of a Siddha, you need not do anything. People say that our past sanskaras are good, that's why we are sin. But I think it was Maharaji's grace and blessings that I could enjoy so much of liberty. Otherwise, I was nobody, I was just like a dust. And I didn't do any kind of puja or devotion or nothing. Neem Karoli Baba, who is popularly called Maharaji, also was one of that kind of avadut. They come for various purposes. They don't come to give you a lesson and teach you in a systematic way. But if you are following a path and if you go to them, you might derive some benefit out of it without their giving you positive instructions. So in their presence, automatically your soul begins to vibrate in a different frequency. That's their function. You can't really say they are my gurus, but they don't make disciples, actually. Siddhi Sai Baba never made disciples either. But there are one category above people who say we are making disciples. He was giving us the tools and setting us free to find our own way a bit. But he was always the pole star for everyone and the guide. And it was almost like you were directed, but not from in an external way. वो कहते हैं ना कि रमता योगी जो है वो चलते हुए पानी की तरह है, नदी की तरह है। वो एक जगह पे कभी रुकता नहीं। कुछ न कुछ कुदरत का सिद्धांत है कि चीज़ वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, फिर घूम के वापस आ जाएगा और चलता रहेगा। So there were siddhas in this area since long time. So it was a kind of hereditary. My father used to be going to all these saints, Sombari Baba, Herakan Baba and others. So it starts from passing this devotion from one generation to another. So I used to hear stories about all these saints and sages. Since childhood we were told that these saints do not come to the town or they just stay in the forest and all that. So once it happened that there was one of her relatives, my stepsister, her family used to live behind our house. So Maharaji happened to come there. So I thought what type of saint he is and this. In my mind, I was quite young. So my father sent me to him. It was just behind our house. So there was someone, my nephew who was quite older than me, he escorted me. I said to him, what type Baba he is? He visits every house?
And Maharaji was listening everything. What is he saying? What is he saying? Then in the beginning he was a bit embarrassed, my nephew. Then tell me what he is saying. He said, the Maharaji goes, visits every house. And he at once got up from that court. He came to my house. The first thing he asked my father, where is that bed on which Hera Khan used to sleep? And my father said, this is the bed. And immediately he asked, Hera Khan gave you one mantra, do you still repeat it? He said, yes, but that was the point. My father became totally, he had never said these two things to anybody. But Maharaji knew it. ये बात होगी 1949 की। तो हमारे फादर नीम करोली महाराज जी के दर्शन के लिए नैनीताल में गए। तो वहाँ गए तो हमारे फादर ने उनसे कहा, नीम करोली महाराज से, कि महाराज मैंने क्रोध को जीत लिया है। फिर उनने कहा कि महाराज आप में और मेरे में क्या अंतर है। तो उसके बाद महाराज जी चले गए। करीब 6-8 महीने के बाद महाराज जी फिर नैनीताल आए। फिर उसके बाद जो नैनीताल आए तो महाराज हमारे पिताजी फिर गए उनके दर्शन करने के लिए। तो उस समय पर गवर्नर मोदी था और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ए.एन. झा ICS, और बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था। तो महाराज जी ने कहा चलो ए.एन. झा के यहाँ चलेंगे। तो सब लोगों ने उनने कहा भी मैं ए.एन. झा मानता नहीं है। उन्होंने कहा चलो। वो चले गए सब महाराज जी के साथ गवर्नमेंट हाउस गए। तो वहाँ पे वो उनके करीब 1 बजे का टाइम होगा। वो उतरे और वो महाराज जी तो नंगे पाँव रहते थे, सब उनके धूल वूल सब लगी उनके पाँव में। जाके उनके ड्राइंग रूम में सीधे सोफ़ा में जाके पाँव उठा के उन्हें रख दिए। 1 बजे के करीब ए.एन. झा जो थे लंच के लिए आए। उनको बड़ा गुस्सा आया कि कौन आके बैठ गया। तो उन्होंने अंग्रेजी में गालियाँ देनी शुरू कर दी उनको, और गेट आउट फ्रॉम माई रूम, हाउ यू डेयर टू एंटर माई रूम। तो महाराज अब हमारे पिताजी को उस समय गुस्सा आ गया। तो वो ए.एन. झा की कॉलर पकड़ने के लिए चले गए। और उस समय तो टाई वाई सब पहन के जाओ, कॉलर पकड़ने के चले गए। वो जैसे ही उनको पकड़ रहे थे तो महाराज जी का चलो चलो छोड़ तुलसी क्या कर रहे हो, चले यहाँ। तो सब पूरी के पूरी जितने भक्त थे वो सब वहाँ से चले आए। तब महाराज जी ने उनसे कहा कि एक दिन तूने पूछा था मेरे में और तेरे में क्या फ़र्क है, यही तेरे में मेरे फ़र्क है। गाली उसने मुझको दी, तू क्यों उसको मारने के लिए दौड़ा। घूमते रहते थे, हजारों आदमी पीछे से मधुमक्खियों का जैसा झुंडा लगे रहे, जैसे मधुमक्खियों का झुंडा। 50 थालियों में खाना आता था, एक समझ वाले नींद में नहीं थे। तो उन्होंने नींद को जीत रखा है। सबसे बड़ी बात यह है, नींद को जीतना भारी है। भूख तो आदमी जीत सकता है, नींद को जीतना बहुत। तो मैंने 1953 में 22 दिन 22 रात रहा उनके साथ। तो मैंने सोते हुए नहीं देखा, सोते नींद में नहीं देखा। बस ये चमत्कार सबसे पहला। मैं भी 22 दिन जगे रहा।
You can imagine how it was at Hanumangarh. It was all like a reeds and marshy, these scorpions, leeches, a place where these dead bodies who died out with the infectious disease, they used to be buried there, and stillborn children. So that was a haunted place. So even during daytime, sunny time, we couldn't dare to visit there. And at that time, when Maharaji, every time he used to look towards Hanumangarh, and we did not know what he meant by that. Then gradually, people would say, oh, there are so many souls. So it is Maharaji wants to do something for the liberation of these souls. So then this Hanumangarh was built and so many things happened. So he used to come for 4 or 5 days or 6 days at the most, visit house of the devotee from one place, and every devotee wanted him to be in his house and have full dinner or food. And he used to visit each and every house every day and take full meal wherever he used to go. At one time, I remember more than 20 meals. I was with him. And one day, there was a devotee of Maharaji. His name was Habba. Then Maharaji sometimes used to play like a child. Habba, how it is so that I eat so much and I digest? Then Habba would say, oh Sarkar, you are like Agni, you are fire. You eat and it becomes Swaha. What else I can say? And Maharaji used to say, enjoy it. It was just like a fun at the time. अनंत कोटि बाबा श्री 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 नीम करोरी महाराज की जय। कुंडल तिलक चारु अंग विभूषणम महाराज जी हनुमानगढ़ी आए हैं, चलती है कहा, तो उससे कहा चलेंगे। तो हम लोग घर से निकले। हमने बचपन से सुना था कि साधु संतों के पास और मंदिर में खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो मैं वो दौनी लेके गई। मैंने कहा चंपा रुक जा, मैं अभी कुछ लाती हूँ इसका। एक मटरूमल फल वाली दुकान है ना, वहाँ से एक संतरा ले लाई। तो जैसे हम लोग रेस लगा दिया हमने, दौड़ के जैसे नीचे सड़क पर पहुँचे, सामने से हनुमानगढ़ी दिख रहा था। मैंने कहा चंपा हनुमानगढ़ी महाराज जी हैं, देख कितनी भीड़ हो रही, मैं तो ये संतरा नहीं दूंगी, एक संतरा इतनी भीड़ में कैसे दूंगी, मुझे शर्म लगती है। वहाँ तो टोकरियों में फल आते हैं और परातों में मिठाई, तू देना। उससे कहा ले तुझे शर्म लग रही, मुझे नहीं लग रही। तो मैंने कहा ऐसा करेंगे, इसको हम रख देंगे वहाँ हनुमान जी के मंदिर में, महाराज जी भी तो हनुमान जी है कहा। उसने कहा हाँ ठीक है। तो जैसे हम लोग पहुँचे, पहले पहाड़ से चढ़ के ऊपर पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो जैसे गेट पर पहुँचे, एक मुन्नी दीदी थी, वो खड़ी थी वहाँ। मैंने कहा मुन्नी दीदी महाराज कहाँ? उसने कहा वहाँ है। तो मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रही? तो कहने लगी, मुझसे कह रहे महाराज हनुमान जी के मंदिर में संतरा रखा है, ला। और मैंने कहा महाराज जी वहाँ नहीं आका, तो मुझे डांट रहे हैं, थोड़ी देर देखती नहीं, रुक नहीं सकती। और मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। मैंने वो संतरा दिखाया उनको, तो मुन्नी दीदी ने कहा देख महाराज जी प्रेम के भूखे हैं। तो ले गई और महाराज जी ने खाया। हनुमानगढ़ी टेम्पल में एक नाम कीर्तन बहुत हुए हैं। 1 साल पहले कंटिन्यूसली हुआ था एक नाम कीर्तन, तो हुआ हमारी अंधेरे में ही हनुमानगढ़ी को। उस टाइम में तो बहुत लोनली था, इतना ट्रैफिक नहीं था, वो नहीं था। और वहाँ पर वो जो हरिदास बाबा थे वो करते थे, कुछ लोग और भी करते थे कीर्तन। वो रात भर करते थे, लेकिन सुबह 3 बजे से भी बाजी बैठ जाती थी वहाँ पर, तब वो लोग आराम करने जाते थे। Maharaj ji, he used to call Mai to every female. He had a very special relationship with them. They consider him father, they consider him their dude, they consider him many relationships, and they in love with them. It was a typical reenactment of Krishna and Gopi Prem. They had their husbands, but they would come out to the tune.
Nidima and Jivantima were very special, and all of them was really special. That's how I learned to sing, listening to them sing at night in the temple. They would leave, there was a window in the back, in the wall, and their room was on the other side of the wall, and that window was to their room. And at night they would all gather there and just party all night long. And I used to sit out there all night and listen to them. It was amazing. Whoa. मैं तो 3 बजे रात में और एक भक्तिमाई थी ना, नौगुचा ताल देखा आपने? भक्तिमाई हमारी किराएदार थी, वो और मैं अकेले 3 बजे रात उठ के आते थे, 3 बजे रात, और अंधेरा होता था। जहाँ वो शमशान घाट है ना, वहाँ पर मुझे डर लगती थी, मैं डरती बहुत हूँ। मैं उनको पकड़, चंपा की ईजा कहते थे हम उनसे, मैं उनको पकड़ लेती थी, तो मुझसे ऐसे कहती थी, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान को जय हनुमान। और बस उनके साथ में हम दोनों जने करीब 9 बजे महाराज जी के यहाँ पहुँचते थे। तो कितने दिन हम लोग पैदल आए 3 बजे रात, और कोई थकाई नहीं। तो फिर वो नैनीताल से सुबह 4 बजे सब झुंड उनका बना, तो यहाँ गया। महाराज जी कहने वाला दरवाजा मत खोलो, वो माई लोग वो तो बेवकूफ है, पागल हो गए हैं। महाराज जी उनको जबरदस्ती भेजते थे कि तुम जाओ, यहाँ जगह नहीं है। पहली बार जो महाराज जी के दर्शन हुए हमको 46 सन में, सुंदरकांड वाले बाबा कहते हैं, उनसे कर मेरी माँ ने सुनाना है बाबा जी के बारे में। ऐसे हिलते रहते हैं, ठीक से नहीं बैठते, चुलबुले हैं, कभी ऐसा करते हैं, कभी ऐसा करते हैं, तो माँ बार बार सुनना चाहती थी। एक दिन महाराज जी ने कहा, तू जानती सिद्धि को? मैंने कहा मैं क्या जानूँ, उनके तो माँ ने ही जन्म से ही उनका नाम ये रखा है, सिद्धि जन्म से ही था उनका नाम। एक बार महाराज जी पाषाण देवी देखा था आपने? पाषाण देवी से मल्लीताल को जा रहे थे डोली में, नैनीताल में डोलियाँ चलती थी, तो डोली में जा रहे थे, तब उन्होंने कहा, कहते हैं वो सामने कात्यायनी रहती है। Then she just kind of, as the years went by, she just, her devotion for Maharaji, absolute, unequivocal, absolute, give me a superlative that says it, devotion to Maharaji, really, she became enlightened to that devotion, like the true manifestation of bhakti, I think, is Siddhi Ma. She just... माई के पास भी कुछ उनका दिया हुआ था. He was not a simple lady. He was not a simple lady. जो महाराज के साथ रहा वो सिंपल कैसे रह सकता. अब वो मेन जो हमारा ये है, ये स्टार्ट होता है सिद्धों के आश्रम से. क्यों महाराज ने पसंद किया काकड़ी घाट, कैंची, हनुमानगढ़? कहते हैं हनुमानगढ़ में हरा खान बाबा भी हैं, तो महाराज ने अपने मुँह से तो बताया नहीं, और जितने सिद्ध पीठ थे वहाँ महाराज ने खुद जाके उनको रिनोवेट किया. विश्वानल हूँ अधिक ना मांगू, विश्वानल हूँ अधिक ना मांगू, मांगू एक चिंगारी,
बताते हैं कि मतलब सोमवारी बाबा का पीरियड खत्म होने के बाद सोमवारी बाबा ने जो है नीम करोली महाराज को पहाड़ में उतारा, क्योंकि ये स्थल खाली है। कैंची में देखते हैं वहाँ भी उनकी क्रिया है और यहाँ भी है। तो इन स्थलों को जागृत करने के लिए महाराज जी ने सब भ्रमण किया। दूसरा ये हनुमान जी के बारे में यहाँ पहाड़ी लोगों में जितना नहीं जानते थे, कूट कूट के उन्होंने भरा। Puja was going on and people had started coming. These village people, they were poor people for prasad. And two of my friends were here. Maharaji asked, oh, people have started coming. Why they are not being given prasad? So I asked my friend, go and ask. Then other person came and said, Maharaji, Havan is going on and the prasad will be first offered for puja and God. Then Maharaji was lying on the cot. Then he became so furious, he got up. Why this swaha swaha? People are dying of hunger and you people have doing this swaha swaha. Bring food, feed them. This is the greatest puja. सांस लेती है वो ज़मीन फिराक, सांस लेती है वो ज़मीन फिराक जिस पर वो नाज से गुजर जाते हैं. Wherever with my stay of maybe 15 years with him, I have not seen a single place where people did not come with prasad, when the prasad did not materialize. मेरे ऊपर तो बहुत विशेष कृपा रही बाबा जी. हमको तो स्कूल के लिए फीस के भी पैसे दिया करते थे. जाओ कमल के नीचे ही निकाल दो. हमको कितनी बार दिए हैं, बल्कि अभी भी उनका दिया हुआ 1 रुपया शायद मेरे पास होगा अभी. हाँ, प्रसाद के लिए है. प्रसाद के लिए अगर बाबा जी जान जाएंगे कि इसको प्रसाद का लालच है, और दो इसको, और दो इसको, भर के दे दो, टोकरी भर के दे दी. महाराज अंतर्यामी थे. गेट से ही कोई ऐसा महान आदमी कोई आ रहा, एक बार गवर्नर को नहीं आने दिया उन्होंने. गवर्नर को दर्शन करने के लिए यहाँ मंदिर नहीं आने दिया. उन्होंने कहा अपना उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं साले. हाँ, नहीं है कह देना. बबनिया के बाद घूमते घामते जब संकसा एक बौद्धों का तीर्थ है, ये जिला फरुखाबाद में है, बेबर के पास. वहाँ जा रहे थे, लेकिन दैवी योग से वह नीब करोरी पहुँच गए.
नीम करोरी पहले थे, वो पुराना स्टेशन। वह यहाँ आए थे उससे भी पहले का। एक्चुअल क्या था, यहाँ गांव में नीम करोरी, गांव में इनके लिए जमीन नहीं मिल पाई, तो नीम करोरी के नाम से वहाँ पे थोड़ा यहाँ से 5 किलोमीटर हट के बना दिया गया। मतलब उस घटना के बाद फिर वो बाबा लक्ष्मण दास, हाँ वो बन महाराज जी। ये जो फरखाबाद टुंडला रूट पे, तो ये वहां से आ रहे थे, इनके पास टिकट नहीं थी, तो टीटी ने इनको उतार दिया। उसके बाद गाड़ी बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं थी, अब गाड़ी चली नहीं। ये तो लोगों ने, गांव के कई बुजुर्गों ने मतलब इसको आंखों से देखा। उसके बाद अभी स्टेशन बनी बाबा के नाम से। सब जगह वो नीब करोरी बाबा के नाम से जाने जाते हैं पूरे विश्व में, मगर इस गांव में उनको बाबा लक्ष्मण दास बुलाते थे, है ना। अब तो उनकी तारीफ है, तारीफ पूरी दुनिया की तारीफ है, यही नहीं, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, कहाँ बताएं, हर देश विदेशों में है। अरे भाई सबई है, जो आदमी परेशान हुई के आओ तो उनकी दुआ से सब भज के चले जाते। अरे अब तो कछु ना, बड़े बड़े दूर के आते हैं, उनकी दुआ आती जाए रही, अच्छे जाना की तब उनका नाम है, और उनके नाम से हम तुम बैठे। बताया हमारे बुजुर्गों ने, बड़े बूढ़ों ने, कि यहाँ बाबा जी 9 साल के थे, यहाँ पे आए तब तो एक झोपड़ी थी खाली कच्ची, वो मेरे सामने बन के, ये मंदिर सेठ जी ने बनवाया, ये सब सीताराम सेठ उन्होंने ये बनवाया। उस टाइम आज के 30 साल से ज़्यादा हो गया बने हुए। उस टाइम बिल्कुल छोटा सा एक कोठरी कच्ची थी। अब सेठ सीताराम पर नजरी करम हुआ, जो उनके रिक्शा बैठाने पर उनकी लाख अरबों रुपए फैक्ट्री चल रही है। सीताराम सेठ राजा हो गए, वो रिक्शा चलाते थे आगरा में। तो वो बाबा जी बैठ गए उनके रिक्शा पे, तो चल दिए आगे जाके एक गली में उतर के, और गली में घुस गए, और पोटरी थी उनके रिक्शा पे रह गई। तो वो रिक्शा चलाते थे, तो वो सीताराम कहने लगे, ये बाबा जी पोटरी तुम्हारी है, तुम्हारी है। तो बाबा जी ने कहा, हमारी कुछ नहीं, तेरी है, ले जा। तो आज वो राजा हो गए, अब रिक्शा नहीं चला। रिक्शा आज भी उनके कमरा पे टंगा है। पोटरी में क्या था? सोने चांदी था। हाँ, सोने चांदी नहीं थी, राख थी। कृपा होगी, कृपा बाबा जी की होगी। अरे क्या आपकी अकीदा है, उनकी दुआ ले पा ले ना ले पा कुछ बात नहीं। सच्चे मन से जो बाबा से गया झोली पसार के, वो भर के ही आया। अच्छा वे जहाँ भी गए उन्हें अपनो परिचय बाबा नीब करोरी के नाम से ही सब मंदिर। कारण क्या था? कारण बताइए, बताइए। जो हनुमान जी की मूर्ति है, वो बाबा जी के हाथों से बनी हुई है, जब बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है, और उसी मूर्ति के सामने उन्होंने तपस्या की, उसी मूर्ति से उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। हनुमान जी के साक्षात दर्शन उनको इसी मूर्ति में में कहा हुए। कि हमें आज अगर कुछ प्राप्त हुआ, नीब करोरी प्राप्त हुआ, हम जो भी हैं नीब करोरी बदौलत, इसीलिए हर जगह बाबा नीब करोरी के नाम से महादेव की श्री रमापति रामचंद्र भगवान की श्री कृष्ण बलदाऊ जी की श्री श्रीवासनी जगदम्बा मैया की। कोई बाबा जी थे 3 साल की 22 भाई थी, तो 22 में उन्होंने कही आंधी है, कि आंधी है लेकिन कोई नुकसान नहीं करे, कहीं ओरे पर है, फिर उन्होंने जाके ओरे ऊपर है, लेकिन हमारे नीब करोरी में कोई नुकसान नहीं हुआ। He had started a mela
there in the month of probably May. So one sadhu came. Sadhu said, तूने ऐसा किया, तेरा मेले को मैं डिस्टर्ब कर दूंगा, तेरे मेले को मैं तहस नहस कर दूंगा, तेरा मेले में तू कभी कर ही नहीं पाएगा मेला. तो महाराज बोले कि मैं खुद इसकी मेले की रक्षा करने आऊँगा. So the story goes that whenever the mela started, a storm would come. That means Baba Lakshman Das आ गए. हमने देखे, हम छोटे ही थे, पढ़ाने जाते स्कूल, तब मुँह नहीं कि निकाल जाते सब जने. छुट्टी भाई बाबा जी चल लगा जाए, फिर मैं मुँह तो दे दी ऐसे ले. अच्छा, मिठाई दे देते. ले लो ले लो ले लो. तो ये कहते हैं मन्नत पूरी करें और इससे बड़ा चढ़ाएंगे और चढ़ाएंगे, बड़ा दिक्कत है और क्या है, तो सब उन्हीं की देन, हमारा क्या है. बाबा जी से कृपा करिएगा तो हमारे घर में बालक आ जाए तब डंडा चढ़ाएंगे आगे. और उन्हें दे दिया कि चढ़ा दिया. साकर में पहले बैलगाड़ी चलती थी, तो और पास गांव की बैलगाड़ी में साकर से बांध के लाते जो पागल हुई जाते. और वे जाकर अरे छोड़ छोड़ कहाँ पागल, छोड़ छोड़. अब सही, बिल्कुल सही हुई है, ऐसे हुई जाती. पहले बैलगाड़ी ही चलती थी, अब ये ट्रैक्टर ट्राली कार है अब ये है. मतलब कि वो कहाँ से लाते थे उनको? ये घर के और पास गांव है, कोस 1-2 किलोमीटर पर 2-4 किलोमीटर के भी आते नहीं आते जो ऐसी हुई. तो बेजाय कहा अरे छोड़ छोड़, बस सही हुई जाते. अब कहा उसे कोई कछु अगर उनसे जा कहा हमारा बाबा अरे बजरंगा बजरंगा से कहा. मतलब बजरंग बली ना कहते, बजरंगा. गुफा में जो बैठे रहते, गुफा में ना हम आप बैठे छोड़ दो और बे कानपुर मिलकर उसी दिन. हाँ, उसी दिन कानपुर, उसी दिन. अब बे कौन है, बे गुफा में और कानपुर लोग जानते गुफा में थे. अब पहुंचे वो दद्दू को मिले, इनके भैया हैं. मतलब जहाँ मिलना चाहते थे लोग वहीं मिल जाते थे. गुफा बनी तो कोई जानते ही नहीं. माता जी आई तभी गुफा खुली गई. उन्हें जान जहाँ कोई ना जाने गुफा यहाँ है, नीम करोरी में कोई नहीं. एक बन चरना दूजे बन चर
समझे आप 60 साल से ऊपर हो गए होंगे। तो वो गुफा जमीन के अंदर ही रही और ऊपर से उसमें खेती होने लग गई थी। इतना समय बीत गया था। किसी ने बताया कि है यहीं, मतलब इसी स्थान पर। माता जी ऐसे एक बार गई हुई थी, एक बुढ़ा आदमी उनको मिला तो उनका, बाबा बताओ तुम सयाने हो, बाबा महाराज की कुटिया कहाँ थी? उनका यहीं तो हटी जहाँ आप खड़े हते, यहीं पे है जहाँ पे आप खड़े हो। बस उसके बाद क्या था, उन्होंने माता जी ने उसको धीरे धीरे करके अनुभवी लोगों से ऐसे खुदवाया। एक जगह जाके फिर उसमें जौ और राख मिल पड़ी, तो इसका साइन हो गया कि यहाँ पे कुछ न कुछ है, काफी नीचे जाने का। बाहुआ खोदी गई तो राख के अलावा और बाबा का राख चिमटा और राख बहुत, और राख तो मैं बोले ना बन रही है। हम लोगों ने पहचानी ना ज्यादा पाओ। नजर नहीं पड़ना, हिरना 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 वैसे रानवारी हिंगन की नहीं है कानेपुर के, वैसे हिंगनवारी नवसार है। तो हिंगन में ज़्यादा जब दिक्कत हुई तो हम लेटे थे, तो लेटवे में करीब रात के 11-12 बजे महाराज जी आए। तो हमारे तमाचू मारो तो हमने एकदम इनकी मातारी जगाओ, हमने की जगह तो और डब्बी जराओ, हमारे चट्टू मार दो महाराज जी ने आज। हाँ, और सपने ही में उनने जाके कि तू परेशान बहुत है, तू परेशान ना हो। अच्छा, उसी दिन तो हमें बहन जी ये पता नहीं है कि हम कितने बड़े कितने पकड़े, हमारी तकलीफ सब दूर हुई। यहाँ ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाई, उन्हें ढोंगी कही, उनकी दशा खराब हुई। उनसे काव कटियों के लिए अपने बोलते ना थे, लेकिन मैं जवाब नहीं। तुम 50 गाड़ी दे आवो, इसके लिए अपने जमान का छोटे रहते हम थे, तब छुट्टी में जा कहते बाबा का गाड़ी दे, अरे मुझे क्या गाड़ी देता, बस खुद गाड़ी खाता, ऐसे कहते। इनकी खासियत तो ऐसा है कि देखिए बाबा 1912 में आए थे। 1912 से 1935 तक उन्होंने अखंड तपस्याएं किया है और उसके बाद जो है 35 में उन्होंने भंडारा बहुत बड़ा यज्ञ किया और भंडारा किया, उसके बाद वो यहाँ से चले गए। We misunderstand what the word tapasya means for somebody like him. We're trying to climb up this ladder with our personal will. These great beings are just preparing, are just cleaning the wires out so they can hold that energy for us. They're not doing tapasya. Tapasya is doing them. They've entered into these bodies for the purpose of alleviating suffering and continuing the work that they've been doing with their devotees for millions of years. And so it's not like one person trying to get something. It's a completely different point of view. महाराज जी की तो कृपा ही है, आप समझो। जो हमारी खुशी वो उनकी खुशी तो हमें खुशी, हमारे बच्चों को खुशी। ये नहीं कि है ये तुम हिंदू और मुसलमान है, तुम फलाने नहीं। एक गांव भर आन गांव की भी जानते हैं। And we met this Baba in Amarkantak, who used to told us a story about
these pilgrimages that people used to take along the Narmada. You start in Amarkantak and you go down to the Arabian Sea, and it was led by this 1,200-year-old sadhu named Gaura Shankar Maharaj. He said Anandamaya in her previous body was on there, Maharaji was there, all these great saints were there. And he said it was Gaura Shankar Maharaj, who was his name, that Baba, handed Maharaj his siddhis and told him to do Leela. So who knows? We know quite a bit about his physical life. Not everything by any means, but we know quite more than he can just drop out of the sky type of thing. He was born in this little village, a little farming village, 35 kilometers east of Agra, between the southern branch of the Grand Trunk Highway and the railroad. So here it's a typical Indian Plains farming village that's where most people don't go 10 kilometers their whole lives. He was born approximately 1900. आज ये जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है, ये पुराना घर उनके पिताजी का, महाराज जी के पिताजी का ये घर था, तो जन्म महाराज जी का इसी में हुआ था। महाराज जी की उम्र जब 8 साल थी, उस समय बच्चों के साथ खेला करते थे। लेकिन एक दिन रात को अपने पिताजी से बोले कि आज हमारे यहाँ डकैती पड़ेगी। पिताजी ने कोई विशेष भरोसा तो नहीं किया, परंतु घर का कीमती सामान एक ट्रंक में भर के पड़ोसी के यहाँ रखवा दिया और उसी रात डाका भी पड़ा और डकैतों ने धन के बारे में बताने के लिए पिताजी और माताजी दोनों की अच्छी पिटाई भी की। ये पहली घटना हुई। But what happened, his mother died, and his father got remarried, and he didn't get along with his stepmother. And they, and he left. He had been betrothed, but not, the shadi didn't happen because he disappeared. बहुत कम आते थे क्या? बहुत कम, वो तो महीना पन्ना कब आएंगे तो आएंगे। वो तो उनकी तपस्या को फल हो कि 7 वर्ष की अवस्था में तपस्या करवे गए और 19 वर्ष के आगे कहाँ जटा है कहाँ, तब इनके घर के जबरदस्ती ले आए। उन्हें गृहस्थ बनाए तो मतलब के नाय गृहस्थी के। महाराज जी छूछात में बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। जब उनका जाटवों का कुआं खराब हो गया तो उन्होंने कहा हमारे कुएं से पानी भरो, और इस तरह से क्या हुआ कि अधिकतर लोग जो थे वो महाराज जी के फेवरेबल थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि 7 टर्म तक बराबर प्रधान बने रहे। Jivanda, who was one of his old devotees, told me they once went in a jeep and they pulled up into the jungle behind the village. And then he and Maharaji started walking through the jungle, and Maharaji had his blanket on. And then Jivan looked again and Maharaji had the headman's uniform on. And they went walking around the village, everybody greeting everybody. Everybody acted like he had always been there. And then they turned around and left, and he was wearing the uniform, and Jivan looked again, and he's wearing his blanket. And that was the other thing. He never left you. And when you got over your emotional, romantic feelings of loss, of not being with him physically, he's there. And people felt him, like in his village. They didn't think he was gone for months at a time. He didn't allow that awareness to arise.
sometimes the relatives came to see him at the ashram, and he would go back to the village to take care of his family at times, and nobody really realized that he was doing that. Right. It was very odd. It was like he just disappeared from one world into the other. Right. And we didn't find out until after his passing that he had 3 children. Roughly 10 or less people knew that he was a householder. Devotees. And they were all Indian. And if you ask his family, you ask Dham Narayan, he was there for every family thing, every wedding, every holiday, and he would just disappear. जब वो हमारे पिता थे तो पिता थे, जब खत्म हो, जब गुरु देखा तो गुरु हो गए। महाराज जी ने गृहस्थ जीवन भी आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। बच्चों को किसी तरह का अभाव महसूस नहीं होने दिया। खाने पीने का, मिष्ठान का घर में कोई कमी नहीं रहती थी। जब भी आते थे तो और भी बच्चे मिलते थे रास्ते में, उनको भी बांटते हुए आते थे। वो कहते रहते थे कि मेरा 1 बच्चे, 2 बच्चे या 3 बच्चे नहीं हैं, मेरे तो सारा विश्व समुदाय के बच्चे हैं, वो सब मेरे ही बच्चे हैं। ऐसे विशाल हृदय बहुत कमी होती है। जब महाराज जी अकबरपुर आते थे, पता लगता था महाराज जी आ गए, हम बड़े खुश होते थे और हम अपने बगीचे में जाते थे तो महाराज जी को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखते थे। तो जब होते तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बच्चा जिस प्रकार अपने पिता से मिलकर खुश होता है, उसी प्रकार खुशी होती थी। तो जब हम पहुंचते थे तो वो कि हम तुमसे मिल लिए, अब हम जा रहे हैं, वो ऐसा बोलते थे तो हम रोने लगते थे। लेकिन हमारा रोना उनको सहन नहीं था और वो हमारे साथ साथ हमारी उंगली पकड़े हुए घर आ जाते। वो एक साधारण हमारे बाबा जैसे रहते थे और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि डेथ तक भी हम समझ नहीं पाए कि ये कितने विख्यात संत हैं या हनुमान जी इनके अंदर विराजमान हैं। ये जो बोलते हैं वो सब सही होता है। ये हमें कुछ एहसास ही नहीं होने देते थे घर में। हाँ, वो एक किस्सा जरूर बताती थी कि जब ये तपस्या से लौट के आए थे तो गांव में आए मिले इनसे, तो इनने बहुत सुनाई, इनको खूब डांटा। तो बोलते हैं कि तू तो ऐसी है कि घर का जोगी जोगना आम गाँव का सिद्ध है तेरे लिए। तो मेरी के आदमी की कोई वैल्यू नहीं है और बाहर कोई संत होगा उसकी पूजा करोगे तो बोलेंगे आम गाँव का सिद्ध है, घर का जोगी जोगना। ये वेशभूषा कैसी बना रखी है, उस समय तो बड़े बड़े बाल थे। कैसी वेशभूषा बना रखी है, क्या सीख के आया है? हमारी दादी ने पूछा तो ला तुम जल्दी ला। सरसों बुलवाई, सरसों अपने हाथ में ले ली और मुंह में डाल ली 2-3 चम्मच और चबाने लगे उसको। चबा के 1-2 मिनट चबाई होगी, फिर उबल के हाथ पे ले आए तो उसमें से 2 अंकुरित हो गई थी, 2 पत्ते निकल आए थे। This was the first incident which he has shown to my grandmother. वो खुद ही बताती थी। तो उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि अब आप देखो जर्मिनेशन हो गया सीड्स का।
हमारे सिस्टर बाबू धर्मनाथ जी को है, संबंध हो गया, उसके बाद मिले, हमने उन्हें पहचाना नहीं, दिमाग में ये रही कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। और बाबा जी कुछ सो नहीं करते थे, बोलते थे तो बड़े वैसे बोलते थे कि समझदार समझ ले, और नहीं पकड़े तो नहीं पकड़ पाए। ऐसी बात करता है, बेअपे को छिपाए रहता है। मतलब समाज में बिन्ने कबूल ये नहीं दिखाई कि मैं मारता हूँ, लियो चाय पियो। वो अपने घरों रह जाते, मैं आगरा में बनवाऊँ, बेनियों कहते गिरजा को ब्याह कर दूंगा, फिर नहीं आऊँगा। उनकी लड़की छोटी और बस कन्यादान कर बैठ गए और फिर ना आए गए। हमारी बहन के बाबू धर्मनाथ जी की पहली लड़की पैदा हुई तो बाबा से कहा कि बाबा कहाँ कि लड़की पैदा हुई है। बाबा बोले ये तो एक है, अभी 6 होंगी। तो वास्तव में 6 लड़कियाँ हुई, लड़का एक भी नहीं हुआ। बाबा जी सब कुछ जानते थे, वे सब जानते। माँ ने एक दफ़े हमारे सामने ही कहा था कि तुम चले जाते हो, बच्चे बीमार हो जाते हैं और फिर मैं अकेली हूँ, गांव वाला कोई मदद नहीं करता है, तो क्या करें। तो वो कहा तुम चिंता मत करो, तुम अगर सुबह बीमार होगा तो हम शाम को आ जाएंगे, अगर शाम को बीमार हुआ तो सुबह आ जाएंगे। और उसको आखिर तक निभाया। हमारा बच्चा भी डॉक्टर धनंजय छोटा था, उसको ऐसा बुखार आया कि 4 बार उसकी नब्ज छूट गई। तो इस तरह से सुबह हो गई और सुबह ही महाराज जी आ गए। महाराज जी ने आकर के बोला कि क्यों चिंता करते हो, मैं मोनी बाबा को रुपए दे आया हूँ। और आके फिर ऐसे दिखाते थे कि जैसे एक बाबा मिला था रेल में, वो कह रहा था कि तुम्हारा नाती बीमार है और जल्दी जाओ। तो मैं सीधा आ गया, उसको मैंने प्रसाद के लिए पैसे दे दिए, वो प्रसाद चढ़ा देगा, ठीक हो जाएगा। ये बाद में पता लगा कि ये सारा काम महाराज जी करते हैं। पहले तो उन बातों पर ही भरोसा करना पड़ता। जामत सजनी, जामत सजनी पिया, जामत सजनी पिया, पिया घर पिया घर विराज रहेरी, विराज रहे पिया। अमृत बरसे बिजुली चमके, चमके चमके बिजुली चमके, अमृत बरसे बिजुली चमके। एक उनमें बड़ी विलक्षण चीज ये थी कि जब उनको जाना होता था, घर से जाना होता था, तो वो इतना कमियां निकाल देते थे घर में कि नाराज हो जाते थे बहुत। तो घर वाले सोचते थे कि अभी महाराज जी घर से चले गए वही बच्चा है, बहुत नाराज हो जाएंगे और बिल्कुल चिल्लाएंगे, बोलेंगे, हर चीज़ पे डांटेंगे, जिससे कि मोह भंग हो जाए इनसे। सन 58 के बाद 76 तक छात्र हो गए। तो जहाँ ले जाते महीना 15 को कहीं
लंबे सफ़र रेल में और छोटो कार से। एक दफ़ा तो बड़ा तारो 45 दिन बाद आओ मैं। यहाँ से गए आगरा, आगरा से झांसी, झांसी से टीकमगढ़, टीकमगढ़ से बांदा, बांदा से फिर कानपुर, कानपुर से बनारस, बनारस से फिर कलकत्ता, कलकत्ता से जगन्नाथपुरी। 45 दिन बाद लौट के आओ तो मेरी बहन ने खाना नहीं खाओ यहाँ। 18 अगस्त 1959 की बात है। One day, I got up quite early, ran through the alleys of Vrindavan and got to the temple. I pranam to Hanuman as each day, and the chowkidar was at the gate, and he said, "You can't come in." And I said, "Why? I came to see Maharaji. I've been coming every day." He said, "Maharaji's gone." And I was, "Well, where did he go?" He didn't say. He left in the night. Word came that he was going to be in Allahabad. So we went to Allahabad, and each day I would go to Dada Mukherjee's house, hoping to see Maharaji, and he hadn't come, and nobody had heard any word from him. So I was kind of depressed. And first of all, my girlfriend broke up with me, and I had no money. And I also got very sick. It was one of those moods where I felt, well, why am I here? Why did I come to India? What is this all about? Just really down. Went to sleep, and somewhere in the early morning, I had this dream. I was waiting at the Allahabad train station by myself. The station was completely deserted, and I was just waiting, and I didn't even really know exactly what I was waiting for. After some time, a train pulled into the station, and it stopped right where I was standing, and stepping out of the rail car is Maharaji, and he steps down. He's just wrapped in a like a light gray blanket, and he came up to me and he opened his arms and wrapped his arms and his blanket around me. And he started crying in the dream, and I started crying in the dream. And he was saying, "Finally, finally, finally, you've come back to me. Finally, you've come back to me." And I felt in my dream that he had been my protector and my savior for lifetimes and lifetimes and lifetimes and lifetimes. And I woke up. I looked at the clock. It was 1:20 in the morning. And after some time, I went back to sleep. So the next morning, I got up, and just like every other morning, I walked over to Dada's house. And everything at the house is a little bit, it's a little different. People are rushing around. And I asked somebody, and he said, "Well, Maharaji arrived last night. He came by himself to the Allahabad station at 1:20 and called us to pick him up." We've been singing Shree Ram Jai Ram to Maharaji for a while in the big room at Dada's house. And I noticed these two young men came in with this very old lady, and they sat in the back of the room. As soon as they came in, Maharaji got up and went into his bedroom, and he called those people in. And the lady just looked at him and said, "Baba, how could this be? How could you be here?" And Maharaji's going, Shut up! Don't talk! But she couldn't. "Baba, how could this be? How could you be here? How could this be, Baba?" And he said, "Ma, shut up." She wouldn't stop. And finally said, "Ma, I died and I was reborn in the hills now. Be quiet." So Dada, who was like the CID for Maharaji's stories, when they left, and he runs around the back way, and he grabs him and says, "What's the story here?" And she said, "I used to sit in his lap when I was 8 years old. He was my grandfather's guru. He looks exactly the same, except I don't remember the blanket. And this was how many years ago?"
She was 8. She had to be 80 if she was a day. He looked exactly the same. And it was the same name. Same name. That's also crazy, huh? वो आते थे, यही सबसे बड़ी बात होती थी यहाँ के लोगों के लिए। भीड़ लग जाती थी इस घर में। एक बार मौसी जी ने कहा, महाराज जी कहाँ घूमते रहते हो, यहाँ हमारे घर तो आते ही नहीं हो। ने बाबा इतने बड़े संत, उनको वो डांटने का अधिकार रखती थी। तो महाराज जी कहने लगे, मौसी मैं तो तेरे दरवाजे पर ही पड़ा रहता हूँ। मतलब यहाँ हर समय उनकी प्रेजेंस। तो मौसी तो बहुत ही रो पड़ी। हमारे परिवार में महाराज लखनऊ में 50s में आते थे। तब हम लोग छोटे थे, 10-12 साल 15 साल के थे। तो महाराज से मेरे पिता बड़े भक्त थे। फादर हमारी जो महाराज घर में पैसा भी नहीं होता था, महाराज कहते थे ये चीज़ चाहिए, इन लोगों को खाना खिलाओ, तो वो जेवर बेच के भी खाना खिला देते थे महाराज के भक्तों को। हम छोटे थे, 4-5 साल के रहे होंगे, तो अक्सर जैसे महाराज के भक्त आते थे, हमसे पूछा उन्होंने कि बाबा जी कब आ रहे हैं बिल्लू, पता करो। तो हमारे पास एक चित्र है महाराज का, वो चित्र मैं ले जाता था एक कमरे में, अंधेरे में जाता था, कहता था महाराज आने का आपका कब है। एक तारीख मुंह से निकलती थी, उसमें हमने जैसे एक तारीख बोली, हमें फीलिंग होती थी कि वो फ़ोटो में उन्होंने कर दिया, बिल्कुल ऐसा लगता था। यस कह दिया तो हम जा कर के वही डिक्लेयर कर देते थे। और उसी तारीख पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो तारीख का इधर उधर कोई वेरिएशन हुआ हो, उसी डेट पे महाराज आते थे। कई बार मेरी माँ ने कहा, महाराज सब बड़े बड़े लोग आते हैं, हमारी लड़की की भी तो शादी अच्छी जगह कर दो IAS IPS की। तो महाराज अपना सिर पीटते थे, मैं कहाँ से लाऊं IAS, कहाँ से लाऊं IPS, ये तो मुझे रोटी नहीं देगी। कितने प्यार से कहते थे, मुझे रोटी नहीं मिलेगी इस घर में अगर मैं नहीं ला पाऊँगा। ये उनका प्यार मैं देख नहीं पाई थी, ऐसे प्यार से कहते थे। और वही हुआ कि मेरी शादी IPS से हुई, मेरे आगे बच्चों की लड़की की शादी IAS से हुई। उनको अगर सेवा करी भी फादर ने, तो उसका इतना रिटर्न देंगे ये हमने कभी नहीं सोचा। तो पड़ा रहता हूँ तो ये महाराज जी ने प्रूव करके दिखाया, ये नहीं कि कह दिया पड़ा रहता हूँ। तखत पे देखा उन्होंने, मौसी ने फूल चढ़ाने गई, देखा थे उनके महाराज जी के फुटप्रिंट, 1-2 नहीं, तखत के ऊपर कितने फुटप्रिंट्स। तो वो 2-1 दिन रहते हैं, उसके बाद हवा में वो डिसअपीयर हो जाते। ये क्लियर है। और यही वो कमरा था, सोए हुए थे दादाजी को तब अध्ययन कर रहे थे बाबा जी के ऊपर कि हनुमान के अवतार हैं कि नहीं हैं। अचानक एक दिन 11 बजे करीब ही इधर कमरा खुलने की आवाज़ हुई। दादाजी अपने बेडरूम से दौड़ के आए तो देखे कि बाबा जी इस कमरे से निकल रहे हैं। उनकी धोती जमीन पर गिरी हुई थी और उनका सर इससे 2-3 फीट ऊपर चढ़ा हुआ था। तो फिर दादाजी सोचे कि चले मैं अपनी पत्नी को बुला ले आऊं, कमला को भी दिखा दूं। लेकिन जब दीदी लौट के आई तब फिर फोटो, तब बाबा उतने ही बड़े हो गए थे। उस युग में देखिए कृष्ण आए तो कृष्ण सब लीलाएं करते थे, अपने बाल गोपाल के साथ खेलते थे। तो कोई जानता था कि ये कृष्ण है और ये इतनी बड़ी शक्ति है, वो लड़का ही मानते थे। One time we were chanting Allahabad,
And Maharaji was sitting on the taket and we were sitting. I had my eyes closed the whole time and I just kind of opened my eyes like this. And I saw he was sitting there, but I saw around him was this big langur. Not a monk, a langur, with white fur and a dark face. It was like superimposed over him. And it confused me until I realized that Hanuman is more of a langur than a monkey. And they go lal dehi lali, say arudali lal langur. And he's red because he covers himself with cinder, but he's not red that way, you know. So it was like, and then I closed my eyes and opened again. It was just my heart. बाबा का कैंप लगता था हर कुंभ महाकुंभ में, लेकिन बाबा वहाँ रात नहीं रुकते थे, रात दादा के यहाँ चले आते थे। हम लोगों को भी ले जाते थे संगम, और संगम के किनारे महाराज जी खड़े होके कुछ हाथ भी जोड़ते थे। और कभी दीदी को या माँ को बाबा ने ये नहीं कहा कि चलो गंगा में संगम नहा लो, ये संगम नहा लो या पूजा कर लो, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। एक बार दादाजी को बुलाए, बाबा ने कहा वहाँ से गिरीश को भेजा, गिरीश कानपुर के पत्ते। बाबा ने कहा कि जाओ दादा को लेके आओ। यहाँ से दादा गए और महाराज जी कहीं एक बार गायब हो गए, नाव से चले गए कहीं। अब गिरीश बहुत देर तक इंतजार किया दादा को लेके। दादा से कहा कि दादा आप चलो। दादा ने कहा कि जब बाबा ने बुलाया है तो आएंगे जरूर। सब लोग वही किनारे खड़े थे और उस समय दादा मन में राम राम करने लगे। राम राम करने लगे, तब से देखे कि बाबा बहुत दूर से नाव से चले आ रहे हैं और दादा से घूमते घूमते किला के पास पहुँचे तो बाबा उछल के किनारे आए और कहे कि दादा मैं बहुत देर कर दिया आने में। कहे हाँ बाबा कोई बात नहीं। तो कहें कि दादा तुम घबरा रहे थे कि हम नहीं आएंगे? कहे नहीं बाबा, हमको तो पूरा विश्वास था कि आपने कहा है तो आएंगे ज़रूर। तो बाबा ने कहा तो दादा तुम क्या कर रहे थे उस समय जब हम नहीं थे? तो कहें बाबा मैं राम राम कर रहा था। तो बाबा ने दादा के कान में कहा दादा राम राम करने से सब पूरा हो जाता है। सब श्रेष्ठ धार हर तुम कृपाल, करता सब तू राम।
It's hard to explain exactly what Maharaji is doing with me. I'm not sure, but it's something. But you feel him constantly. Yes. He's a very strong teacher. Maharaji like custom makes lessons for each person, and I tend to have a real like strong, tough way about me. So I get some really strong, tough lessons. I get opportunities to be softer and to be kinder every day. Especially coming here. Yeah. And it's very strong here. Because the culture is so different. That's a very powerful thing for me. Because I think in actuality in life, we don't understand. We don't know actually what's going on. What has Maharaji got going on for me and for him and for everyone? We don't know. And the more you don't know, the easier it is. I really started to see that the guru that's not alive is still here. He's here. Maharaji's here. He's even stronger that he's no longer just in one form. From his point of view, I mean, we're incapable of understanding the simplest word from him because it comes from a place of selflessness, which is we can't even conceive. We asked him, "How do you find God?" He said, serve people. And I said, "What?" He said, "How do you raise Kundalini? He said, feed people." What? So I remember sitting in the home of Dada Mukherjee. We all sit in a row with the leaf plates on the floor, and they would come by with buckets of food and just put more and more and more. I kept saying, "Boss, enough, enough," but they would keep giving you more until you had to turn the plate upside down. Then they would stop. Maharaji said the Westerners did not know how to give and receive love, that they couldn't receive love, and the food was symbolic of the love. Yeah. Some sick people would come visit Maharaji, and he would give them a bag of puris, fried, and the grease was dripping out of the bottom of the bag, and he'd say, "Eat this, eat all of them," and that would cure them, because he blessed them. So. Yeah. एक बड़ा अचंभा रहता था, उनके साथ साक्षात अन्नपूर्णा चलती थी, क्योंकि मेरे घर में जितना खाना बना है, एक पहले पतीली में बनती थी दाल, उसी में महाराज जैसे ही आते थे जीना चढ़ के, और सब लोग 20 जने आ जाते थे, उनको खाना खिलाओ सबको। तो थाली में खाना जब दिया जाता था तो महाराज सबको खाना खिलाओ, सबको खिलाते थे। एंड में मेरी मदर उस पतीली से खाना खिलाती थी, जिसमें पूरा 20 जने खाना खा लेते थे और ख़त्म नहीं होता था। कितना छोटा था पतीली? बहुत छोटी थी, जिसमें मुश्किल से 5 आदमियों का खाना बनता था, और 20 आदमी 30 आदमी खाना खा लेते थे। It was all kind of an interesting thing. लोगों में प्यार भी था, लोगों में मोहब्बत भी थी, लोगों में मजाक भी थी। तो कुछ किसी लोगों के लिए तो कुछ न कुछ चमत्कार था, कोई मिरेकल होता रहता था, किसी लोगों के लिए वो था ही नहीं, सिर्फ ये प्रेम था। हाँ, बस it was just a relationship of love, a little bit of joy, sometimes a little bit of pathos. I was the driver. He took Ramdas's keys to the van away to Botswana and gave them to me. He said, "Jeff is the general. He's the driver. Ramdas is a saint. He can't hold money. He isn't. So I'm the driver." So I carried those keys with me every day, and I really wanted to drive Maharaji in the car, but I never said anything to anyone. And then one day, like a year later, Maharaji looks at me and goes, "Chabi hai?" Chalo. So we walk out of Dada's house, and Maharaji's walking with Dada, and the Volkswagen bus seat is high.
So Maharaji had to throw himself up into the seat, and he bashed his head on the top of the door, really hard. And I went, oh, Jesus, this is my fault. Look what I've done. And he did it. And I said, Dada, did you see that? And Dada said, be quiet. He did it on purpose. Just drive. That's a real devotee. Maharaji could not do anything that was not on purpose. Everything he did had a purpose. And he believed that. He said, be quiet. He did it on purpose. Just drive. So then I'm driving Maharaji. And he's going, watch out, oh, you're going too fast, slow down, be careful, don't hit, watch that one over there, watch out. And I'm just, and we drove to the banks of the Ganga to the Sangam, and I turned the car off, we sat there for a minute and said, Jello, let's go back. And then I drove back to the city, watch out, be careful. So then some days after that, we were sent away to go on this yatra. I don't remember what town it was. It was outside of Allahabad or somewhere. There's this long, slow curve, and it's right by a river or a reservoir or something. And I went into the curve too fast, and we were going off. We were about to go. I felt the car shifting off. I couldn't control it. We were going to go off the road into the water. And all of a sudden the wind came over, blew us right back on the road. And then I remember Maharaji hitting his head. How did I get here today? I met Ram Dass's writings as a young man when I was in my early teens, and it affected me a great deal. And then as life went on, I left them behind. Got in a real bad way, got into drugs, and really my business was successful, my marriage was successful, but I was torn apart inside. And it's hard to tell the story in a real small way, but an event happened where we partook of a plant that put us into a samadhi or an altered state for 24 hours where you couldn't move. And during that time, Ram Dass Maharaji came back. Many, many, many of us met Ram Dass. He had met Maharaji in India and then came back, and for several years, 2.5 years or so, he went around and talked of his experience. And we all had a definitive feeling of connection, not only to him, but where he came from and who that being was, Neem Karorii Ji. He had talked about his guru without naming him, and we knew, and he would say, everything that I have comes from him. So then it was like, then I want that. And I did
I was very, very single-pointed, as many of us were. Even though he was told not to say anything about Maharaji, he did. Except he never said the name, nor did he say where he was. Clearly, when I met Ram Das, he was the conduit for Maharaji. And it was hard to know that at the time, because it seemed like this very sharp Western, former psychologist and all of that. I was expecting to, hear the Harvard professor, and he showed up, wearing a white like ulfi and barefoot in what was still the winter time in U.S. So he looked like a yogi. I met Maharaji the first time I met Ram Das in America. I walked into the room where Ram Das was, and that was it. At that moment, I knew that whatever it was I was looking for was real, and it was in the world. I didn't know what it was, but that was my epiphany at that moment, and nothing changed from that moment to this. I remember driving down in the, we were coming in a taxi from Nainital down to Kainchi, and you go down those switchbacks in the hills, and finally you see the ashram down below. And then, as you come closer, Maharaji was out sitting on his takhat. But that feeling of coming down the hill to that place was just this remarkable feeling of coming home. So when these people, Westerners, they used to sing bhajans before Maharaji. Maharaji used to be in tears sometimes because he knew and understood their hearts. They were so pure. Then sometime, at some cases, I have seen that he used to call some Indian devotees who had that ego. No, they are the superior. Okay, sit down. Then he would ask these Westerners to sing, and they would sing this Aarti or bhajans, Sri Ram Jai Ram or Hanuman Chalisa. Then says, look at them, how pure they are. It is not in the sanskaras of the Westerners to sing Hanuman Chalisa or like that, but even then when they sing it right from their heart. Maharaji used to sit in the office. They used to sing Gopala, Gopala, Sri Ram Jai Ram and Hanuman Chalisa. Millions and millions times of Hanuman Chalisa. Finally, that temple was constructed there. So Maharaji was he never seemed to do anything, and yet everything happened. We sang with him. We sang to him because he liked it. And it was our way of spending more time with him, which is all we wanted to do.
Well, India has this tradition of saints and yogis and holy people, which we don't have in the West. I mean, not living anyway. They're very rare. And so Maharaji was completely extraordinary for us. You know, it was not like you couldn't treat him as a normal person. Whereas I think a lot of the Indians, for them, he was like almost a family figure. And he advised them, took care of them in such detail. Yeah. But most of us had come on some kind of spiritual search, you know, that we had started probably before coming. I would say the part that I didn't even know I was looking for was the heart. So how did he address that? He fed us with love. He stuffed us with love. It was just that complete joy of being with him. Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sita Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sita Ram. But he called me Dr. America, and he would yell at me very loud, wherever I was in the ashram, Dr. America! And sometimes he would say, Dr. America, come here, I have a headache. And I would come to see him. He said, what will you give me? What good American medicine will you give me for a headache? And I didn't have anything. Maybe I had an aspirin or a tiger balm, and I would give it to him, and he would put it on his head. And he would balance it. Oh, this American medicine is so good. It's cured my headache. Thank you, Dr. America. Everybody's seen Dr. America. It's cured my headache. कि महाराज जी मैं कितने बार गुस्सा हो जाती थी आप तो अंग्रेजों से बात करते हैं हमसे कहा मैं जा रही हूँ मैं नहीं करूँगी आपसे बात बैठ जा बेटा मैं इनसे बात नहीं करूँगा बंद कर दे दरवाजा और बैठ जा तो खिड़की भी बंद कर दे वो भी बच्चे जैसे बन जाते थे ना हम गुस्सा थे मतलब हमें लगता था कि वो सिर्फ हमारे ही हैं वो किसी के नहीं I was not one of these people to push up to the front. I said if the guru has something to say to me, he will say it, you know. So I didn't wave my hand or touch his feet, you know, but I was sitting in the back and I thought, I've been here a month, he doesn't know that I'm here. At that point, a banana dropped out of the sky and landed in my lap. Well, actually, we were in a room. There was no sky, it was this small room. And nobody was throwing fruit around, you know, it just suddenly dropped there. I knew it was from Maharaji. So here I'm surrounded by all of these images of Hanuman and Ram and Sita. And the part that I hated the most was that everybody would bend down and touch Maharaji's feet. I hated it. It made me feel like I was breaking an oath I have with God to not have any other God before him. And I wound up walking around the Nainital Lake from Malital, Talital. I got in a boat, I went on the lake, and I found myself for the first time in my adult life praying. I wasn't sure how to do it. And I said, God, just give me a sign that this is the right place for me to be, that Maharaj is the right person, that he's real, that this is not some kind of a cult that's captured my wife, that I belong here. Any sign. I got nothing. And I laugh about it now, but I was brokenhearted. And that night I came and I told Gertrude that I was going to leave. And she said, you know, you have to follow your own heart, but I wish you would stay. But I really felt like this was the wrong place. I tried to get her to leave. She wouldn't leave. The next morning, I set out to go, and she said, well, aren't you going to come and say goodbye to Maharaji? I said, sure. We got down to Kainchi very early,
we were just sitting there, and I noticed that on his tucket, the people in the ashram and the villagers have taken fruit and flowers to spell out Ram. And the central cross of the M was made by an apple. And while we were sitting there, that apple rolled off the tucket. I reached down to pick up this apple to complete God's name, and Maharaji bursts out of like a movie star, bursts out of his doors, sees me, sees what's going on, and immediately steps on my hand. It felt like he weighed 1,000 pounds. And I suddenly realized I'm touching his foot. The one thing that I didn't want to do. And I got such an almost electrical charge that I felt like I was holding on these cables that were connected to the center of the world. And while he's keeping me pinned down there, and I'm touching his feet, I'm so confused about what I'm feeling. He said to me, "You were not here yesterday. Where were you?" "Oh, yes, I know." And then he looked at me and he said, "You were at the lake." Everything else was in Hindi, but lake was in English. And I started feeling what I now recognize as my kundalini. And he looked at me and he said, "What were you doing at the lake? Were you swimming?" Nobody could swim in that lake. "No." "What were you doing at the lake?" And he said, "Oh, yes. You were talking to God." "You were talking to God." "Oh, yes. You were asking for something. You were asking for a nishan. You were asking for a sign, weren't you?" And when he said that, and it was translated for me, "Were you asking for a sign, talking to God at the lake?" That was my own pranashati. That was, then I knew, okay, I started to cry, and Maharaji grabbed my beard and started pulling my beard and playing my girija, hugged me and tried to wipe away my tears. And then all the satsang had just arrived and they started coming in. And every one of them had a story that was as powerful for them as this story was for me. I was a New York hustler, businessman, and he never asked me for one paisa. He would never allow me to donate money. To this day, I go to the ashrams, I live there, they won't let me. And they need money to pay the rent. रामदास ने एक 20,000 का चेक काट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नैनीताल महाराज के पाँव में रखा। महाराज ने मुझसे कहा, मेरे सामने की बात है, महाराज ने कहा, मदन उठा इसे। मैंने उठाया। क्या लिखा है इसमें? मैंने 20,000 रुपया बाबा नीम करोरी फाड़ दे इसे। मैंने, महाराज मैं क्यों फाड़ूं? वो देने वाला आपको दे रहा है, फाड़ना है तो आप फाड़िए। महाराज ने पकड़ा, उसे फाड़ दिया। तो महाराज ने मुझसे कहा, इनसे कहो हम विदेशी का पैसा नहीं लेंगे। फिर आज से उन्होंने, महाराज ने उनको अलाउ कर दिया कि तुम यहाँ आके प्रसाद बांट सकते हो। But Maharaji never wanted anything from us. We couldn't give him money. He didn't care if we were there or not. There was no way of buying his attention in any way whatsoever. One day, he said, "Dr. America, how much money do you have?" And I thought about it, and I said, "Maharaji, I have $500. He said, "How much money do you have back in America?" And I thought about it, and I said, "Well, I think we have another $500 there." And then he said, $500 here, $500 there, Tumto Dr. Nahin. And Maharaji started saying, Tumto Dr. Nahin, Tumto Dr. Nahin, Tumto Dr. Nahin.
You are no doctor. And he switched to English. You are no doctor. You are no doctor. And then he said, UNO doctor. UNO doctor. United Nations Organization doctor. Dr. America is going to become United Nations doctor. He said, you will go to villages and give vaccinations. Chechek jo khatra mahamari khatam karna unmulan ho jayega. And he said, Bhagwan ka isha hai. He said this was God's will because of the hard work of so many dedicated health workers. We had 150,000 health workers working in the field. He said, go. And I said to Maharaj, I said, go where? He said, WHO, Joe, Delhi, Joe, Joe. And I said, well, when? He said, Abi, Joe. I said, well, that's crazy. I for a moment, I kind of forgot I was a real doctor. I was there to serve Maharaji. I was making tea. I was taking Lucy plants. Many of us did Buddhist meditation, Vipassana meditation. Yes. And it was just so-called happenstance that when some of us went originally, Maharaji could not be found. I went to Sri Aurobindo ashram, in my case, and then many others went to Goenka. So he would say, are you going to the course? In English. Course kaya? And yeah, I'm going to the course. And then we'd go to the course and come back and he'd say, did you learn how to meditate? Yes, Baba. Ham, Baba. And he'd go, okay, show me. So we'd all sit up like this, and the next thing you hear high peals of laughter and all the Indians around him all laughing at us. That was how he taught. He was not go there, do this, none of that. But does that mean that he wasn't really encouraging the meditation? Did you continue? He never encouraged meditation. Everything had that kind of playfulness. If you asked him too seriously about samadhi or your own karma or any of the deeper, what we thought were the deeper meanings of the Sundarkand and Hanuman's devotion, he would let you go a little way in that conversation, and then he'd quickly make a joke. When he was in the body, he barely allowed people to take photos. Mm. And filming was, or writing about him was, people were said to have been transferred who did that. He was a very well-known scholar, and he was the governor of UP for a while. And he wrote a piece about Maharaji, and Maharaji reamed him out about it. He said, if you look at my picture, I can see you. Yeah. I mean, you either believe it or you don't believe it. Yeah. And if you believe it, then here he is sitting in the room. We think of photographs as sort of artifacts, right, but it's also a transmission. It's a multi-dimensional mirror in a way. Yeah. I mean, Maharaji is that. When I took a picture of Maharaji and I illegally pasted it on the windscreen of the WHO Jeep, which you're not allowed to, and I would go into a village and talk to the civil surgeon and say, you must work on smallpox. He would say, kuchne, I've got so many other things. And then he'd take me, because he was a gentleman, he'd give me a cup of tea, and then he'd walk me out to the car, and then he'd see the picture of Maharaji on the car. And he said, who is he, and who is he to you? I said, well, that's Karolii Baba, he's my guru, and he said that smallpox is going to be eradicated. And this civil surgeon who had just rejected my attempt to get him to work on smallpox would then say, Neem Karolii Baba says smallpox is going to be eradicated? I said, yes. Come back and have another cup of tea. Because Maharaji's name had such credibility that when he would say something, people would work for it and take it seriously.
as most of the Westerners, including Steve Jobs, were involved with psychedelic substances. Okay, and I started taking some psychedelic substances in 1961 when I was 18 years old. And they were absolutely changing. Most of us wouldn't have been there if it wasn't for those experiences. Maharaji says taking LSD is like window shopping. You can look in the window, but you can't buy, you know? So it shows me what's there. You have to achieve on your own. He used to say, the yogi medicine, which he called the yogi medicine, brings you into the room with Christ, but you can't stay. The only way to stay is love. What I remember is there were lots of people there. Lots of people, and I went and sat at the back. I was a very young man one day. And Maheshwarnath Babaji, my guru, had told me, Babaji is there, go and see him. Maheshwarnath Babaji was convinced that Maharajji had some connection with Shree Guru Babaji. So I went there. There was a big crowd. So he was sitting, like normal, like laughing, Then he looked like that and he said, usko bulao, he said. So then mujhe bula, हाँ, आपको बुला दे. यहाँ बैठो, said. So I said, but Babaji, यहाँ. Baitho, he said. So I sat down. It was as if he didn't sit, he'll give me a shot. It was almost like that. Then he patted me on my back many times and said, oh, Babaji ka bachcha aaya hai, Babaji ka bachcha hai. And he was laughing loudly. Then, that blanket which was there, come rain or sunshine. So he put his hand inside the blanket and took out a rotten apple and he gave it to me. And he said, khao. I was looking at it and I didn't know isko kya kare, should we eat? Then again he said, khao, so quickly I ate it up. I didn't know how I kind of ate up. And then he said, abhi jao. When he said abhi jao, there was no way waiting. But sitting there and talking to him, I knew that there was something going on between him and me. I can't put it into words. I can't define it for you. So you can see how, on the level of these outstanding beings, there is a direct connection. There is no this ashram or that ashram and this sect or that sect. It doesn't exist for these people. There is each individual being which is unique and it has its unique way. So the real master knows that and guides accordingly. You cannot have a mass prescription. That is the beauty of the whole ancient Hindu culture. There is no particular system meant for everybody. He told me my guru was Jesus. And I didn't want to hear that. I didn't come to India to hear I should be a Christian, do you know what I mean? The funny thing is, he came to me the next day on the street in Nainital, but he looked like somebody else. And he said, what are you doing in India? You have Jesus Christ. I didn't realize that was him at the time.
because he would say Hanuman and Christ are one. And now, so many Westerners, especially Neem Karorii Baba devotees, know Hanuman Chalisa in the West. It's extraordinary. It is sub ek hai. It's the same. It was the curse to Hanuman in the childhood that you will forget your power. Because he used to throw away many of the things of the saints and sages living in the jungles. He will throw their worshipping gods in sea or in river. Then someone cursed him that you will forget your power. And he really forgot for many years. We don't know how many years. But when he met Ram, Lord Rama, and they went in the search of Sita, Jamwanta, the oldest one, then he reminded Hanumanji, Pavan Tanable Pavan Samana, Buddhi Viveki Vigyan Midhana, Kavan Sukaj Kathin Jagmahi, Jo Nahi Hoi, Tad Tum Pahi. And Jamwanta says to him, why are you forgetting your powers? Because you are the son of Vedi, you have much more power. Then Hanuman becomes taller and taller and taller. No one is to stop him. घूमने के लिए घर से निकला। जब वृंदावन में निवास था, जब महाराज जी का आश्रम बन रहा था, आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय, बाबा जी विराजमान थे। मैं आया पूछ करके, बाबा जी मेरे सामने से निकल गए। मैं नहीं पहचान पाया क्योंकि उनका कोई वेशभूषा संत जैसा या बाबा जी जैसा नहीं था। चद्दर ओढ़े हुए थे और धोती पहने हुए थे। मुझे शंका और बढ़ गई कि यहाँ कुछ आडम्बर मालूम पड़ता है, ये बड़े आदमियों को अपना दर्शन देते होंगे, हम जैसा कहाँ दर्शन देंगे। जब मैं पहुंचा तो महाराज जी ने मुझसे प्रश्न किए, तू कहाँ से आया है, कौन है तेरा, कौन डायरेक्टर, कौन कमिश्नर, कौन मिनिस्टर, और भी 20 तरह के सवाल दिए। सत्संग की कोई बात नहीं थी। मैंने सोचा कि ये क्या कर रहे, सत्संग की बात, भगवत चर्चा तो कुछ कर नहीं रहे, ये कैसे संत हैं ये यहाँ पर। फिर भी मैं बैठ गया, हाथ मेरे सर पर रखा, कुछ ऐसा मैलम पड़ कि हड्डियाँ जो है टकरा रही हैं। बैठ गया, बैठ कर के किसी व्यक्ति से कहा, बैठे जैसी भीड़ लगी हुई थी, अच्छा अब तुम जाओ। कुछ ही सेकंड में, मिनट भी नहीं, अच्छा अब तुम भी जाओ। दोबारा फिर मैंने आग्रह किया था, अब और जोर से चिल्ला करके बोले, नहीं अब जाओ, आज्ञा हो गई है, फिर आना। ये फिर आने की बात तो मुझे अच्छी लगी, और जो फटकार लगी तो मुझे लगा अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मारपीट की नौबत आ जाएगी, इसलिए यहाँ से निकल चला। बड़ा तमतमाता हुआ, गुस्सा में होकर के निंदा करता हुआ उनकी। नहीं जी, वो तो कह रहे थे बहुत बड़े महात्मा, ये महात्मा है, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, अश्रद्धा लेकर के, और उनको कोसता हुआ आश्रम से निकल के जा रहा हूँ। लेकिन बचपन में ये सुन रखा था, न मालूम कौन किस भेष में मिल जाए।
हमारे शहर से, रानीखेत से, ये 15 जून में बहुत से लोग आते जाते थे वहाँ। तो उन्हीं के द्वारा सुन कर के हमको भी एक दफ़े कुछ स्कूल के बच्चों के साथ हम भी चले गए। एक दफ़े बाबा जी हमसे बोले तुम इधर आओ, यूँ किया, उन्होंने इशारा किया। तो मैं गया, मैं पहले डर जैसा गया था। तो हमसे बोले तुम मेरे पे यहाँ रहेगा। मेरे मुँह से पता नहीं क्यों ऐसे निकल गया, जबकि मैं अपनी माँ को एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता था। मेरे गांव में अगर रिश्तेदारी में कहीं शादी वगैरह में भी जाना होता था, मेरी माँ मुझे नहीं भेजती थी। उसका इतना स्नेह था हमसे, और मैं सबसे छोटा बच्चा था। और पता नहीं उस दिन क्या जो हुआ, मैंने कह दिया हाँ मैं रहूँगा। क्या हुआ थी ऐसा? उसमें यही रहोगी, 12-13 साल की होगी। दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, हम वहाँ से उनके साथ चले गए। फिर हम सवेरे करीब सूर्योदय नहीं हुआ था, हम वृंदावन पहुँच गए। धीरे धीरे फिर हमने पुजारी कृत्य करना शुरू कर दिया महाराज जी के कहने पे। तो वो मंदिर बनाया था एक आनंद राम मंगतू राम जयपुरिया थे, जयपुर के रहने वाले, उन्होंने बनवाया था मंदिर महाराज जी के आदेशानुसार। उसने तो मंदिर बनवा करके महाराज जी को अर्पण कर दिया। बोर्ड जरूर लगा रखा था उसने अपना कि ये मंदिर फलाने 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 ने बना रखा है। तो वो जयपुरिया आए, मैं अंदर रामायण पढ़ रहा था, तो उसके साथ भी कई लोग आए थे उसके परिवार के। हमसे बोला ए लड़के इधर आओ। मैं हो गया, मैंने कहा लड़के करके कौन बुला रहा मुझे। सब लोग पंडित जी या पुजारी जी करके संबोधित करते थे। बोले तुमको किसने रखा? मैंने कहा महाराज जी ने रखा। बोले तुम तो ठाकुर हो? मैंने कहा हाँ। अब तुम तो कुछ जानते नहीं हो, पढ़े लिखे तो हो नहीं। अब मैंने कहा जो हूँ सो हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, न आपको उत्तर दे पाऊँगा, मुझे महाराज जी ने रखा है बस, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इतनी मेरी उसकी बात विवाद हो ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई जयपुरिया इधर आओ। पीछे से महाराज जी आए। महाराज जी इतनी तेज़ी से आ रहे थे, मैं समझा एक तो ये बिगड़ रहा है, और मुझे लगता है महाराज जी भी बिगड़ेंगे यहाँ मुझे। तब तक महाराज जी के साथ साथ इतनी गाड़ियाँ आ गईं कि वो भी सब भर 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 करके महाराज जी का पहले कमरा जो बना था, बड़ी तस्वीर लगी है वहाँ तख्त पे, तो कमरे में जब महाराज जी गए और गुस्से में थे, जब तक मुझे बुलवाया, अब मैं और डर गया। मैं वहाँ जब गया मैंने देखा तो पूरा कमरा भर गया। हमसे बोले इधर आओ। महाराज जी बोले, मैं नीचे बैठा। हाँ जयपुरिया क्या पूछ रहे थे इससे? मैंने कहा महाराज मैं यही पूछ रहा था, मैंने इतना बढ़िया मंदिर बनाया और यहाँ कोई विद्वान पंडित होता पुजारी, और इससे मैंने पूछा ये तो ठाकुर है सुना है और पढ़ा लिखा भी नहीं है। अरे तुम क्या जानो, ये बहुत पढ़ा लिखा हुआ है। अरे तुम क्या जानो, तो इसके पास डिग्री नहीं है बस। डिग्री कौन सी? मीराबाई के पास क्या डिग्री थी, कबीरदास जी के पास क्या डिग्री थी, तुलसीदास जी के पास। एक सांस में उन्होंने कई साधु संतों के नाम ले लिए। वो महाराज जी का शरीर तमतमा करके लाल हो रहा था एकदम, और इतना क्रोधित हो गए उसके ऊपर, तोड़ दो अपना मंदिर साले, हमारे पास 50 लोग हैं मंदिर बनाने वाले, बोर्ड हटा दो, यहाँ से वहाँ तक बोर्ड लगा रखे हैं तुमने, और ये मंदिर को तोड़वा दो अपना, तुमको इतना अहंकार अपने पैसे का। बोले क्या सुनना चाहता है इससे, बहुत बड़ा विद्वान है ये, तुम नहीं जानते इसको। तो वो भी अहंकार में चूर था। उसने कहा महाराज जी गीता सुना देंगे। हाँ गीता सुना देगा, कौन सा अध्याय सुनना चाहता है? उसने कहा 11वां अध्याय सुना देगा ये। तो मैं महाराज यहाँ बैठे थे, मैं नीचे बैठा था। तो मेरा तो जब जब वो बात हो मेरे उसी लय में तेरा शरीर कांपे, मुझे डर लगे मुझे। तो महाराज जी ने एक दफ़े ऐसा कुछ किया कि यूँ जैसे पैर बदला और वैसे कम्बल मेरे ऊपर ढकते हुए अंगूठे से मेरे यहाँ पर टच कर दिया, और फिर मैं बिल्कुल ऐसा बेहोश हो गया कि मुझे कोई फिर होश नहीं है। लेकिन ये मुझे लग रहा, आभास हो रहा था कि हाँ मेरे कंठ से आवाज़ आ रही है गीता के श्लोक।
और इस प्रकार की आवाज़, इतनी शुद्ध आवाज़ मुझे सुनाई दे रहे थे वो, लेकिन मुझे और होश नहीं हो रहा था। पूरा कमरे में सन्नाटा हो गया, जितने भी लोग बैठे थे। तब तक देवपुरिया बिल्कुल रोने लग गया और महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा कि इनसे माफ़ी मांगो, इसका तुमने अपमान किया है, इनसे माफ़ी मांगो। तो इतना बड़ा आदमी वो शेठ आनंद राम मंगतू राम जयपुरिया करके उनके आगे लगता था, उसने हमारे पैरों पे सर रखा। गीता तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी, रामायण और हनुमान चालीसा बस गीता हमने कभी छुई भी नहीं थी पढ़ने के नाम पे। तब से फिर हम वहाँ पुजारी नियुक्त हो गए। हर कजर वस्त्र अभरण कीने, हर कजर वस्त्र अभरण कीने, उड़ीनी 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 कब घर आवली मोहननी जैसे रात्रि होती है वो गुस्सा उस तरह से सवार है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। जब घर में पहुंचा हूँ, प्रवेश किया है, तब मुझे करंट, जैसे बिजली करंट लगता है उस तरह से शॉक लगा है और मेरे मुंह से जबरन ये निकला, ये महापुरुष हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं है। मोहन रूप देखावे, मोहन रूप देखावे, अब मोहिनी अब तो मुझे बिल्कुल ये विश्वास हो गया ये परमात्मा है। खुशी हो गई, यानी मुझे क्या मिल गया मैं आपको उतना उसको व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे खुशी में रात को नींद नहीं आई है, ये परमात्मा मिल गई, इनकी स्तुति होनी चाहिए, इनको मैं प्रार्थना होनी चाहिए, ये संकल्प हो गया उसी समय। ऐसे ही रात्रि को लिखता रहता था, नींद आती नहीं थी खुशी में और थकान भी होती थी। पत्नी आ गई तो उन्होंने कहीं देख लिया होगा लिखते हुए। एक दिन वो बोली कि मुझे मालूम है तुम किस रंग में हो। उन्होंने कुछ समझा कि मैं गलत चिट्ठी लिख रहा हूँ। ऐसे ही बैठे हुए थे, माई लोग बैठे हुए, तो एक महिला बोली कि वो लव लेटर है भक्त का भगवान के लिए। और वास्तव में तो बात तो यही थी। One point Maharaji says to Ramdas, he said, when you were in India last time, did you give me medicine? Ramdas said, yeah. Now the thing is, nobody knew this, but when Ramdas had come back from his first trip, he told everybody that Maharaji had taken a shitload of acid and nothing affected him at all. And that was a really big thing for Ramdas because LSD had changed his life. But some people said, come on, he threw it over his shoulder. It's just, he didn't take it. So there was this much doubt. Nobody knew that, but Maharaji knew. So he said, when you were in India last time, did you give me medicine? Yes. Maharaji said, did I take it? Yes, I think so. Oh, got any more? Yes. Give it to me. So Ramdas held his hand out. He had like 3 or 4 tabs of this very strong acid. Maharaji went like this. Like that, 3 or 4 times.
And then he says, can I drink water? Hot water? Cold water? He drank some water. And after a few minutes, he takes his blanket, he puts his blanket up over his head like this. And then he opens it up and he goes like, and he goes, Ram Dass turned purple. And he told me later, he thought he really didn't take it the first time. And he knew I doubt, so he wanted to prove it to me. Now I've killed my guru, look at him. And the minute he had that thought, Maharaji dropped the whole Leela. And he said, yogis have known about this for thousands of years. He said, for a yogi, no poison can affect him. He met Maharaji in 1972. This was in Vrindavan. He was doing parikrama for a month prior to that, every day, in the hopes to see Maharaji, to have his first darshan. Every day he was going around and they said Maharaji is not seeing anybody. So the day of his birthday, February 11, he had Maharaji's first darshan. And Maharaji was accompanied by two sadhus. And when Ramgiri saw him, he said that he felt like a puppet, like he was being lifted from the top of his head. And Maharaji did this motion, and he didn't understand what that meant. And then he did it again, and Ramgiri didn't understand. So the sadhus were laughing at Ramgiri. And one of them came to Ramgiri and said, it's okay, now you can go. And then he went to the temple to have prasad. And one day, it was probably February or March '72, so I'd already been in India for 2 years, and I had a dream, and I'm not a vivid dreamer. I don't always remember my dreams, but I remember this one very clearly. There was a little man in a plaid blanket with his legs crossed, and the blanket was pulled over his knees, so it was like a little triangle on the other side of a field with a little bald head sitting on top, and he was going like this. I knew I needed to meet Neem Karoli Baba because I dreamed about him, and I met several more of his devotees. Finally, I went to Vrindavan and I went to meet him. All these Westerners were sitting around and some Indian people standing around, and he looked up and he saw me, he went like this. And he saw me again, and then I sat down kind of far away, and he did like this, and people said, move closer. And finally he kept doing like that, just let him laugh, because he wanted to let me know he knew he'd come in the dream, yeah. हमें तो बाके बिहारी गए तो यही बाबा दिखाई दिए, यहाँ भी यही बाबा हैं। हमें तो हर नजर में, हर रोम रोम में बाबा जी दिखाई देते रहते हैं। You know, it's what Mirabai says to that Baba in Vrindavan. He says, I don't meet women. She says, oh, I thought we were all women. That's the way Maharaji was Krishna. And everybody was Gopi. The hearts are all gopis. Bhakti, according to my understanding, is an integral element of one's spiritual progress. It comes as an intense desire to do something. That itself is bhav. Without that, it all becomes dry. Without that, it's not possible to practice anything. Yes. You might end up in an illusion that I have reached somewhere. The heart that has to break
You know, if your heart stays in one piece, you won't understand what is love. It has to break. You give everything. You're ready to give up everything. So what is that? It's a feeling, right? It's not intellectual or it's not acrobatic. It's not breathing. Yeah. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He said, remember God. For me, He's God. And chanting the names, bring me deeper into His presence. That's what I want. That's where I want to be. I don't know anything else. I don't know who Hanumanji is. I don't know who Ram is. And I don't know who Maharaji is, but I do have certain experiences there that I can lock in on. And I'm very blessed with that. I mean, I wouldn't be alive if it wasn't for that. I'm serving Maharaji. It looks like I'm singing to people, but I'm serving Him. That's by His grace, I'm serving Him, not by my own. There's no way I could do this by myself, on my own. I'm just a transmitter, like a radio. He's the music. Do you feel He's more present when you're singing the Kirtan with? He's ever present everywhere all the time. It's whether we're paying attention or not. So when we're chanting, we are paying more attention. Especially a large group of people who get together with the same motivation, it's very powerful. So we have a different quality of experience at that moment. He hasn't changed. He didn't come closer or went further away. We changed the way we're living in that moment. वृंदावन को उन्होंने अपनी लीला का निर्वाण स्थल चुना। ना पांच भौतिक शरीर यहाँ ब्रजरज में विलीन कर दिया। ब्रजरज का बड़ा भारी महत्व है। एक दिन कहने लगी मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, मेरी मुक्ति कराए तो पड़ी रहो जा गेल में साधु संत चल जाए, ब्रज रज उड़ी मस्तक परे मुक्ति मुक्त हो जाए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Because he had said, you know, I'll run away, nobody will find me. Where will you run where we can't find you? Oh, there by the Narmada, by Amarkanta. तापे हारि सृजंतु सर्मदे
तदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे They say it a dream, which I don't say so. I saw महाराज आए और महाराज ने कहा हम अमरकंटक जा रहे हैं, हम अमरकंटक जा रहे हैं। मैं उठ गया। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं मेस में गया नीचे और न्यूज़पेपर आ जाते थे हॉस्टल में, उसमें फ्रंट पेज में था बाबा नीम करोली पास। वो 11 सितंबर थी। महाराज ने एक समय बुला के कहा कि रात हम शरीर छोड़ना चाहते हैं, कोई जगह बताए। तो अगर कोई होशियार आदमी होता, बुद्धिमान, वो पूछता कि महाराज कब छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, हम कहाँ मिलेंगे। पूछने के बजाय मैं अपने को इतना बड़ा मैंने समझा, नहीं महाराज हम यकीन नहीं करता ऐसी बात में। उल्टा गुस्सा होने लग गया, वो उन्होंने हंसी में टाल दी। जब बाबा जी यहाँ कैंची में से गए उस समय हम उनके साथ थे। उस समय उन्होंने, बाबा जी ने कहा कि आज मुझे जेल से छुटकारा मिल गया है। जाते समय ताली पीटते हुए सब मंदिरों में मत्था टेकते हुए, नहीं तो बाबा जी मंदिर में मत्था नहीं टेकते थे, खाली ऐसे चलते चलते ऐसा कर लेते। लेकिन उस दिन खूब हंसते हुए और कहते हुए गए कि आज मुझे जेल से छुटकारा मिल गया। और यहाँ से बाबा जी वृंदावन गए तो दूसरे दिन खबर ही आ गई थी कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लोगों को पानी पिया उन्होंने। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश 3 दफ़ा शब्द बोला और शांत हो गया। नहीं शांत। फिर डॉक्टर आया, थोड़ी देर में डॉक्टर, उसने देखा वाला उसी स्टेशन लाके यहाँ रख दिया महाराज। When he left his body in September '73, it was, for us it was definitely like a media crashing. It was, we didn't know what to do. बाबा श्री नीम करोली बाबा, ऐसे मैं कान लगा के खड़ी हूँ। आज उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। मैं तो हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, क्या कह रहा है रेडियो। फिर मैं किराएदार था, एक तलवार वायरलेस में काम करता था। वो तलवार गया नीचे पोस्ट ऑफिस से घर आया, नीचे आया। उसने मेरी सास से कहा माँ जी नैनीताल खाली हो गया, सब वृंदावन चले गए, महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। मेरा तो ऐसा हो गया, मैं मतलब प्रेग्नेंट थी, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, जा भी नहीं सकती थी। पंख रहित पक्षी जैसी हो गई मैं, देखते रह गई। When he was first diagnosed, he would call me sometimes, and I always knew it was him because the caller ID said Apple computer. I picked up and I said, Larry, do you still believe in Maharaji? I said, yes, of course, Steve. Why? You still believe? He said, yes, of course. I said, Steve, are you okay? He said, I've just been diagnosed with cancer. Can you come talk to me about Maharaji again? I asked him, did he have any disappointments in his life? And he had 3. The one was that he never met Maharaji in person. And when he died, he had a copy of Miracle of Love on his bedstand and a picture that Giri had given him of Maharaji and the one blanket that we had of Maharaji. बाबा जी का जब शरीर छूटा तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि हमको भी खत्म हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे। तो एक दिन मैं हनुमान जी के मंदिर से बाहर को जा रहा था सड़क की तरफ को, तो एक साधु आया, वो भी वैसे बिल्कुल शरीर का था, बाबा जी के ही जैसे शरीर का। मुझे बल्कि ये लगा भी, जब मैंने उनको देखा अरे महाराज जी आने, यूँ लगा मुझे। तो कहाँ जा रहे हो, बहुत परेशान हो ना, यूँ कहते हुए मुझे अंदर लाए वो। तो मैं उनका हमका रोना आ गया मुझे। बोले क्यों रो रहा है। मैंने कहा हमारे महाराज जी थे, वृंदावन में रहते थे, तो अब कहाँ चले गए तुम्हारे महाराज जी। मैंने कहा उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अभी कुछ दिन हुए हैं। बोले अरे पगले कहीं के, संत कहीं शरीर छोड़ते हैं, शरीर बदलते हैं।
उन्होंने इसमें से निकल के दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो पहले तो एक शरीर से थे, अब पता नहीं कितने शरीर से हो। समझ लो मैं भी वही हूँ, तू भी वही है। Certain moments come when you can grasp a little spark from these siddhas. Then he would suddenly say, Kailash, did you see how many people come? I said, yes. Tourists of people come from Mount to eat. So nobody asks about God. Did you see? I said, yes. Everybody is worried about his family. Then he used to be in tears. योग यज्ञ तप नहीं व्रत पूजा, कलयुग केवल हरिगुण गाहा. So what you can attain by all these yogas, japa and tapa, you can attain much more than in this Kalyuga just by singing the glory of God, Hanuman, and having the satsang of these saints, high saints. लेकिन उन्होंने कलयुग के लिए हनुमान जी को साक्षात बताया, साक्षात देवता है और है भी, फिर चिरंजीवी माने जाते हैं। सप्ताह चिरंजीवन जो सात हमारे पुराणों के हिसाब से ये हमेशा रहने वाले हैं। वो जब वो सोते थे तब भी राम राम उनका नाम जब चलता रहता है, राम 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 राम। आजपा जाप था, बैठे होते थे आपसे बात करते रहते, जब भी राम राम होने लगता। He would send us encouraging letters when I was at WHO, and Ravi Khanna would write on the outside, Maharaj said, open this quickly. This is the advice you need today. So I opened it up, and it was all in Hindi, of course, and it said, Ram 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 Ram, and covered with Rams. And when I would go back to the ashram and I would say, Maharaj, what is this advice? Well, that's the only important advice every day. But his chanting of the mantra is not the same as a normal, ordinary man's chanting of the mantra. That is something we have to know. Yes. And when Maharaj said Ram, it need not mean Ayodhya Ram. Shuddha Brahma Parat Pararam. The real essence of Ram is Shuddha Brahma. संत के श्रेणी में वही नहीं, संत तो हम देखते हैं ना, वो तो कभी उपदेश नहीं ऐसा करना, कभी उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, लेकिन उनका ये मेरे को पूरा विश्वास है कि वो परिवर्तन, हृदय परिवर्तन करते हैं। जो कुछ करना है उन्होंने खुद ही करना है। आओ खाओ जाओ, मैं तो प्रसाद वाला बाबा को कहते थे, आओ जाओ खाओ। राम 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 Shri Ram 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 Ram।
भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात है। किशोर और किशोरी भरे हुए भवन में जहाँ बड़ा जन समाज बैठा हुआ है और नेत्रों से ही बात कर रहे हैं। नेत्र बोलते नहीं हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो महाराज जी की जो तरह तरह की मुद्राएं हैं, उनकी आंगिक भाषा ही आध्यात्मिक है। राम राम राम। Siddha is sitting in here. You just sit in front of him. By his sight, by his what you call silence, by his words, by his touch, or just sitting in front of him, your whole being can be changed within no time. This is true. This is the quality of Siddha. Because they don't have an order to maintain or a particular hero worshipping clan out there. For them, it's their freedom. So if you ask me, if there is a word that can define Maharaj Ji, I can say freedom. There are no norms. The unconditioned can't be put into any conditional terms. His teachings weren't discourses. You didn't have to engage your mind. It's so simple, and his teaching is so simple and yet the most difficult to really, really embrace. Love everyone, serve everyone, remember God, and tell the truth. Now, those, sounds simple, but try to really do it. Try loving everybody. Shri Ram 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 Ram। आप एक चीज कह रहे हो, मैं हर चीज जानता हूं कि वही करवा रहे हैं। एक एक पल, एक एक क्षण में उनको महसूस करता हूं। हम कहीं जाते हैं तब भी हम यही समझते हैं कि वो भेज रहे हैं। अपने आप से मैं समझता हूं मैं कुछ नहीं करता हूं। Even from the first time sitting on the side of the road, I started talking to him in my head. Okay, what does this mean? Who are you? And why do I feel so different? And that's my practice. And sometimes without me asking, he says things to me. Not in a voice, but in like, oh, okay. महाराज का जहाँ चिंतन है, महाराज का जहाँ प्रेम है, वहाँ महाराज। महाराज का जहाँ प्रसाद है, वहीं महाराज। वहीं पर दिव्य स्वरूप उनका विद्यमान हो गया। नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न वै, योगियों के हृदय में भी निश्चित मैं नहीं रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं पर उपस्थित हो जाता हूँ। Even now, new devotees have that feeling of unconditional love from him. That there's nothing about them that is not okay when it comes to his love. And I've seen it, people come into the ashram in Taos, and they don't know anything, but they wind up sitting and looking at his picture by the tucket. And the next thing you know, they're crying and they're sobbing and they're like, oh, and you say, what, are you okay? And they're like, so much love from him. And it's just a picture, but they're feeling him even now. And I think that's the remarkable thing about him. During my life, we've had deaths of, my son died. We've had times that were really hard, and I've gone through my own
dark night of the soul. And we keep coming back to Maharaji. It isn't that faith is the fire that never goes out or gets dimmed or is challenged. It's that faith is such a strong fire that always rekindles. If you define grace as good things only, I think you're missing the point. Actually, Ram Dass came up with a term that's quite interesting called fierce grace. And his stroke is an example. It's not that he protected us from those, because the grace is the growth of accepting. Grief is a very powerful experience, and it's not an unusual experience. But what is the grace of it is it's allowed me to be compassionate in ways I never was, to have empathy that I never had. I thought I was a pretty good guy. I found out I had a lot to learn. And he said, once I take your hand, I never let go, even when you let go of mine. It's true. Although we don't always recognize it. Yeah. And when we lose the awareness of that, we suffer. But when we have the awareness of that, we're okay with whatever happens. So for us, for devotees, his devotees, we're okay when we remember him and when we forget. We're not. It's that simple. उनका प्रेम जो था ना, प्रेम के भूखे थे सब लोग, और वो प्रेम जो आज भी अगर हम लोग आपस में लुटाएं तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं। आपको वो स्वयं में कंप्लीट कर देता है। यू बिकम योर ओन लाइट पोस्ट। ऑल्दो द इल्यूमिनेशन इज ऑफ द गुरु, अंदर है आपके गुरु बैठा हुआ है। फिर आपको क्या ना, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। मैंने एक डिटैचमेंट का लेसन वो देते थे, अक्सर कहते थे वो। The grace is so gentle. It is just like not imposing. Very subtle, and you may listen to the touch or not. It's up to the moment. This is why these moments are so unique. They are giving everything all the time. And we are taking so little. And most we refuse. What I can learn in this very moment if I'm really like a flower open to the sun. They have the very good heart, all this Siddhant. They can turn your mind in any direction. In Ramana there is a couplet, Soi janat jehi dehu janai. Only those persons can know whom he wants to know. ये लोग साधु तो हृदय पहचानते ना कि किसके कैपेसिटी से कहते हैं। वो गाना है ना, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाये तो क्या किया।
भगवान की माया है। तपस्या करके भगवान मिल जाएंगे, संत नहीं मिलेगा। संत के दर्शन बहुत दुर्लभ है, ये कहा गया शास्त्रों में। संत की महिमा कौन बता सकता? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। संत की महिमा वेद भी नहीं जानते, कोई पता नहीं पड़ता है। क्या बखान करे जाए संतों की माया, कुछ नहीं जाना। Maharaji came to me on my birthday last year, 50 years ago since I saw him, and he gave me a big hug. He said, I want you to know I love you, because I never felt he loved me. But I thought that was a strange experience. I spent all that time sitting with that fat, naked guy that he hardly talked to me, and now he comes after 50 years. He hadn't forgotten about me. Do you know what I mean? That he knew 50 years ago what my destiny was. When he said, finally, you got it. You got it. Like, that it's inside. You see, he wanted everybody ultimately to find the Guru within. ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ.